Hello, everyone. Welcome to this post-match analysis. This special episode is going on SportsKhabri, Curious Harry's channel, and Shayan's Indian Food and Football. It's also going on Arun Food, but today we're missing Arunawa Chaudhary. We've always got the other two suspects with us. We've got Hiren and Shayan. Thanks, guys, for joining in. Hi. Two games today. Hello, hello. First double header of the season. We had Odisha FC versus Chennaiyin. Odisha won that 2-0. And then after that, we had Mohun Bagan versus Punjab FC. Mohun Bagan won that 3-1. It's a little. I want to, there's a little recency bias. I feel like we should talk about Mohun Bagan first, but the Odisha Yes, game happened exactly. first. Yeah, but yeah, so you guys want to talk about the Mohun Bagan one first, and then we'll move on to the other one? Yes, definitely. Perfect. So then, okay, my take on this game, I think they played well, Mohun Bagan. Hmm. There were Hmm. goals were good. The second goal was beautiful. Liston Colasso, that assist was brilliant on the same wavelength as Petratosh. But there was a chance, there was a sneaky chance that Roundglass had to come back in this game, and it almost felt like they'd equalized, but there was an offside. Hiren, first thoughts on this game? आई थिंक डेफिनेटली मोहन बगान तो एज एक्सपेक्टेड कि जिस फॉर्म में वो आ रहे थे तो उनसे तो मतलब एक्सपेक्टेड था इसी तरह का परफॉर्मेंस उनके लिए मतलब अनिरुद्ध थापा नहीं थे जिसकी कमी आज देखी मिडफील्ड में आई थिंक क्लियरली वो हाँ। विजिबल था जिस जो मतलब जनरली अनिरुद्ध थापा की रिसेंटली अगर आप देखें तो उतनी ज्यादा बात नहीं हुई है लेकिन एक काफी क्रूशियल प्लेयर बन के उभरे उनके लिए सो आई थिंक वो एक कमी खल रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने जो मतलब उनसे एक्सपेक्टेड था वही परफॉर्मेंस उनसे तो आया लेकिन पंजाब एफसी ने फर्स्ट हाफ में डिसअपॉइंट जरूर किया सेकंड हाफ में आई थिंक अच्छी इंटेंसिटी के साथ उन्होंने कमबैक भी किया एंड फर्स्ट मिनट में ही आई थिंक सेकंड हाफ के उन्होंने एक चांस भी क्रिएट कर दिया था सो सेकंड हाफ में अच्छी इंटेंसिटी रखी उन्होंने बॉल भी काफी सेकंड बॉल काफी विन किए उन्होंने यहाँ पे उतना ज्यादा बॉल भी मोहन बगान को नहीं रखने दिया सो लेकिन उनके पास भी अगर आप देखिए तो उनके जो आई थिंक बैकलाइन है वो पूरी इंडियन बैकलाइन थी कहीं वहीं मेरे को लगता है कि जो फर्स्ट दो गोल आए उसमें कहीं ना कहीं वो आउट ऑफ शेप चले गए थे बैकलाइन से वो शेप अपना होल्ड अप नहीं कर रहा है आउट ऑफ पोजीशन भी आप देखिए सेंटर बैक हो रहे थे बार बार तो दैट्स व्हाई अदरवाइज सेकंड गोल ऑफसाइड भी हो सकता था आई थिंक इजीली वो मतलब हो सकता था सो वाला चीज था तो आई थिंक जो चेचिया से वो अभी रिसेंटली उनके लिए टीम ज्वाइन की है सो दैट्स व्हाई वो आई थिंक इस मैच को नहीं खेले आई थिंक सेकंड मैच से वो भी आ जाएंगे और उसके अलावा उनके जो दो प्लेयर है सैमुअल किन्से एंड अमरजीत सिंह की यहाँ मिडफील्ड में वो भी यहाँ पे अभी नेशनल टीम के साथ है तो वो भी अनअवेलेबल थे सो आई थिंक पहला मैच था आई थिंक ओवरऑल मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि उतना कोई बुरा खेली है पंजाब एफसी टू बी ऑनेस्ट एंड आई थिंक यहाँ से उसको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी क्योंकि पहला ही मैच आपका मोहन बगान के सामने पड़ गया तो आपको पता चल गया कि भाई क्या आईएसएल का लेवल है एक आपका क्या बोलते बेंचमार्क सेट हो गया अब इससे बढ़िया तो अभी कोई करंटली कोई टीम है नहीं आपके लिए तो आई थिंक उनके लिए आई थिंक लर्निंग लेसन जैसा होगा एंड लेट्स सी कि किस तरह से सेकंड मैच में वो कमबैक करते हैं Shan, were you impressed by Punjab, especially in the second half? Did you think there was some fight and they proved to be an ISL side? Yes. In the second half, especially as Hiren was saying, in the second half, they somehow came back in the match, scored a goal. In fact, they were in verge of equalizing that offside, which was turned down. I thought that was a 50-50 call. It could have gone either way. It gone Mohun Bagan's way, but they showed an intent. What I liked about the second half, they showed intent. They showed that they are ready for ISL, and Mohun Bagan being one of the superior teams of ISL, they also understand the level of ISL. First game of ISL they were playing, and they understand that. I think in coming times this team would only improve. And rightly pointed out by Hiren, 4 Indian defenders. Shape loss costed this game for them. I think that they lost their shape, and somehow I think if you see Melroy, Nikhil Prabhu, all are good players. I'm not saying or Mohammad Salah. They're all good players. The problem is that in ISL you need people who can take that responsibility to the next level. Then these people that don't have that experience in the top league, top tier league. They were a good player in I League, but ISL is something different, and now they will understand that. And I think Punjab FC can only improve from here. Being an away match, they showed a character. They give a good fight to Mohun Bagan, which I really liked. And I expected a game to be more one-sided, but it was not. Punjab FC on the second half was quite a decent side, and deservingly Mohun Bagan wins the match because of their individual brilliance, and they had some good changes. Manveer coming again in the final round and changing the game for Mohun Bagan there in place of Subhasish Bose. I think
I think I am very very impressed with the Punjab FC. If you ask me, very very impressed. Um, Harry, Sushmit's asking you to talk about Glenn Martins. He started in midfield. Obviously, probably might not happen throughout the course of the season. Utkarsh, before Harry answers this question, we'll get to Odisha. We'll talk about that game in detail. We'll finish off the Mohun Bagan game first. Yeah, Harry. Definitely, Keval the Glenn Martins is one of the lords we have, and he is in that list. So, as expected, during the watch along, we made a list of lords. Who else? Who else What, is there? Who else is there there? are a lot of lords. One is obviously Lord Beke. Another is Preetham Kotal. Other is Pranoy Haldar. Glenn Martins obviously is there. फिर कौन है रहीम अली इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉर्ड फिर There. अदर देन दैट आई थिंक बस ये मतलब करंटली अभी ये सारे लॉर्ड की लिस्ट में आते हैं तो आई थिंक मतलब नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम एंड ग्लैन मार्टिन्स देखिए गलती बंदे की थी वहां पे क्लियरली एज ए विजिबल मतलब वो था रहीम अली को नहीं भूले भाई माइंडसेट भाई बिल्कुल नहीं भूल सकते भाई रहीम अली को ग्लैन मार्टिन्स मतलब आई थिंक जॉन फर्नांडो का फेवरेट प्लेयर है टू बी ऑनेस्ट एफसी गोवा में भी भाई आप उनके साथ था वो तो एक ट्रस्टेड प्लेयर है लेकिन अभी मतलब इंजरी के बाद वापस आया फिर रेगुलर खेला नहीं है तो थोड़ा सा वो भी हो सकता है लेकिन ही हैज टू स्टेप अप भाई आप एक्सपीरियंस प्लेयर से मतलब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इस तरह की वो मिस्टेक करेगा ब्लंडर सो वाला चीज है वहां से अगर मान लीजिए कि दूसरा गोल अगर मार दिया होता पंजाब एफसी ने जो कि ऑलमोस्ट आने वाला था तो आप देखिए कि आपका पूरा गेम का सिनेरियो चेंज हो जाता भाई Exactly. सो ये कोस्ट कर जाती है कभी कभी आपको चीजें आज फॉर्चुनेटली आज नहीं किया तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर मोहन बगान अदरवाइज मतलब काफी दिक्कतें आ सकती थी तो आई थिंक ही विल लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक लेट्स सी Yeah, and almost cost him. Shine, what about you on the error? Not acceptable for somebody playing for Mohun Bagan right now to be doing it, but yeah. No, but that is something which I will not that he's a very experienced player. हो जाता है गलती कभी कभी. It's something which is not beyond any player's control, but but this kind of things can be avoided because if you played in the league for so, but if it's in case of a Punjab FC player like Milroy or somebody who's come from directly from the I League, whose experience in top league is not so much. But being an experienced campaigner, I expected more responsibility. Team expects better responsibility from a senior guy. And he being one of the trusted soldiers of Juan Fernando. So that was I think it could have been avoided, but this is part of game also. Yeah. Manjob's given his take on the best players of the day, Sahal and Juan Mera. Yes, Guys, who do you think were the yes. standouts in this game? Hiren? Yes, agree. Sahal were Agree? brilliant in this game, without a doubt. Yeah. He is a brilliant game, and Johan Mera also for particularly in second half, he is a I think very very crucial on that creating chances. I think second half में जो पंजाब एफसी की ओर से जो राइट विंग पे आई थिंक मेरे हिसाब से प्रशांत थे वो आई थिंक थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया उसने काफी बार उसको स्पेस मिल रहा था सारी चीजें मिल रहा था लेकिन वो 1-on-1 में डिसअपॉइंट किया उसने वो वहां से फिर आगे कर नहीं पा रहे थे अदरवाइज काफी अच्छी सिचुएशन में या फिर पोजीशन पे आ रही थी पंजाब एफसी कि राइट साइड से आप और ज्यादा डेंजरस हो सकते थे और क्रॉसेस भी आप देखिए क्रॉसेस की एक्यूरेसी थोड़ी सी वो थी अदरवाइज सेकंड हाफ में उन्होंने भाई बरबर के चांसेस क्रिएट किए हैं एक यहाँ पे कमेंट है कि रितम भाई का कि भाई फुटबॉल का इमोर्टल 11 कौन है किसने क्वेश्चन पूछा बता दो कैन यू गाइस हेल्प फुटबॉल का इमोर्टल 11 ये क्या होता है इमोर्टल मतलब ये सारे लॉर्ड आई थिंक लॉर्ड को ही रख देते हैं इसमें रेफरी भी है हमारे पास लॉर्ड की लिस्ट में क्रिस्टियन जॉन इज वन ऑफ द लॉर्ड फिर राहुल गुप्ता इज वन अदर लॉर्ड सो पूरा एक स्क्वाड बन सकता है लॉर्ड का रेफरीज सब कुछ रख सकते हो गोलकीपर सारी चीजें Well, yeah, Shayan Sushmit's asking for a swap deal. Mahesh for Glan. नहीं वो तो नहीं हो सकता और because 3 साल के लिए महेश अभी हम लोग का हो गया तो सुष्मित को एक्सटेंड कर लिया महेश ने हाँ 27 तक 2027 तो अभी अनाउंसमेंट तो नहीं किया कि कर दिया थोड़े अनाउंसमेंट कर दिया अच्छा अच्छी बात है चलो Well, yeah, Lord Beke is saying good fighting spirit by Punjab. Fair enough. I think they did give a good fight. I think in the second half, they looked likely to score after they half the deficit. But Rahul, I need to add one thing. I think I sure. must admit that
the Sahal Abdul Samad, I think the way he's playing in Kolkata after he came to Mohun Bagan, I think he's someone is showing a good consistency. I think somehow he's able to cope up with Juan's system. I think better than other players who have come down with bigger names. I think Sahal is able to get into the team very properly, and I think Sahal's influence in the game for Mohun Bagan in many of the games till now what I've seen is impacting. I hope that he continues in this way. Many people in Kerala question that how would he uh, absorb the pressure of Kolkata Maidan, but I think he's from Kerala, and Kerala also has a huge fan base pressure there. So he's able to do it. And in Kerala, he was a homegrown child, so there were more pressure. I think here he has lesser pressure, where I think it's फोकस उसके good for ऊपर him to उतना grow. ज्यादा अभी नहीं है. हाँ, वो अच्छा है. Oh, that is good for him. So Yeah. I am really liking the way he's playing and all. And another player, Liston Kulaso, I think EB में बोलना चाहूँगा. Liston Kulaso was also today, I think, one of the standout players. for But Mohun Bagan. which issue with Liston Colasso is सन भाई की कंसिस्टेंसी. एक मैच में हाँ. आपको लगेगा कि इससे बेटर इंडियन प्लेयर कोई नहीं है, और दूसरे मैच में आपको Correct. लगेगा कि इससे वर्स्ट प्लेयर कोई नहीं है. The main issue हाँ, with वो है. Liston Colasso is consistency, and same with Sahal I would also think, क्योंकि लास्ट Yeah. टू लास्ट सीजन आप देखिए सहल का, केरला ब्लास्टर के लिए बेहतरीन सीजन था उसका. 6 गोल आई थिंक उसने मारे थे, 5 या 6 गोल उस तरह से कुछ था. एंड लेकिन लास्ट सीजन आप देखिए पूरा इनकंसिस्टेंट चला गया, और उसके चलते आप देखिए उसकी स्टार्टिंग 11 में भी जगह नहीं बनी. तो ये इंडियन प्लेयर के साथ ये इश्यू जनरली हमने देखा है कि वो कंसिस्टेंसी यहाँ पे लीग सीजन बाय सीजन नहीं दिखा पाते. एक सीजन बेहतरीन करते हैं, दूसरे सीजन पूरा डीप आ जाता है. तो वो वाला एक इश्यू है. तो लेट्स होप सो कि वो आगे जाके हमें नहीं देखने को मिले विद क्या बोलते हैं कि सहल अब्दुल समद. Yeah, Ishan, I completely agree with you. I think Ashish Rai is a workhorse. Do you guys see him getting ahead of Nikhil Pujari to the national team? Is there a shout for him to start maybe for India? Why not? मैं आज बोल रहा था कि आपके पास 5 अभी फुल बैक्स अच्छे हो गए हैं. एक तो लेफ्ट साइड पे सुभाषिस बोस, आकाश मिश्रा, अभी रोशन भी आपने Right. देखा कि इंजरी से वापस आ चुके हैं. इज प्लेयर ब्रिलियंट, और राइट बैक भी खेल सकते हैं. निखिल एंड क्या बोलते हैं कि आशीष राय. तो 5 फुल बैक्स आपके लिए नेशनल टीम में मिल चुके हैं, जिसको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो. सो दैट्स अ गुड ऑप्शन टू हैव. And definitely Nikhil Pujari has to step up their game, because there is a lot of competition. Roshan and Ashish Rai is playing brilliantly. They both started very well on ISL. So अच्छी बात है नेशनल टीम के लिए कि आपके पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे, that's a better to have. Yeah, and this is a topic that I wanted to actually discuss with you guys anyways. Jason Cummings, did he impress you by any chance? Shan, were you impressed by what you saw from Cummings today? Because I wasn't, to be honest. See, Jason Cummins is coming from a different country, and he's played this 4 or 5 games. It's too early for me to comment on how he's a player. As a player pedigree, what I've seen of him in Australia, and prior to that also what I've heard of him, he's a very good player. If he's a good player, that's why he was part of the Australian team in World Cup. So that's a part, and he was a top scorer of A-League last season. So he has the quality actually. Somehow it will take some time. I remember same thing last year with Brendan Hamill coming from Australia directly. He had this issue in Kolkata, the food, the weather, and he had many issues, stomach issues and all when he was in Kolkata for the first 2 months. After that, he recovered, and I think Cummins will also recover. I think he's a good quality player, a good player of good pedigree, and it's about just time he'll perform. There's no doubt about his quality. He may not be so impressive, but Rahul, I'm very much sure that this player is magical, and he would show the real true colors after some few games. Fair enough. Guys, one person who clearly proved that he still got it. What a finish from Manveer Singh. I think first time coming off the bench, and he's on the score sheet. What else do you want from a substitute? Because he's obviously not got a look in today. He's not started the game. But what sort of impact has he made? Do you think he has a shout to start the next few games? I think he's becoming a super sub for Mohun Bagan, and impact he's putting in. I think it's great to see. And एक बात उसके साथ अच्छी दिख रही है कि सेकंड हाफ में जब वो आ रहा है, तो सामने वाली टीम थोड़ी सी अगर क्या बोलती है कि थकी हुई है, तो उसके पास जो पेस है उससे वो मतलब काफी बार बीट कर देता है प्लेयर को. एंड वही आज भी वही देखने को मिला कि थोड़े से यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरह से उसने दोनों सेंटर बैक के बीच में से वो स्पेस बना के उसने मतलब गोल स्कोर किया. दैट्स ग्रेट टू सी, एंड दैट्स वी वांट फ्रॉम आवर क्या बोलते हैं स्ट्राइकर इन नेशनल टीम ऑल्सो. काफी सारे लोग बोल रहे थे मेरे को उस टाइम पे कि मनवीर ऐसा फिनिश नेशनल टीम के लिए क्यों नहीं करता, जो कि सही बात है.
नेशनल टीम के लिए हम तरस जाते हैं इस तरह की फिनिश देखने के लिए, बट दैट्स अ ग्रेट टू हैव सी कि भाई कॉन्फिडेंस बंदे में आ रहा है। लास्ट सीजन भी थोड़ा सा इंजरी की वजह से एट द एंड ऑफ द सीजन थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया था, अदरवाइज पूरे सीजन अच्छा फॉर्म में था, एंड इस सीजन भी उसने शुरुआत अच्छी की है। सो दैट्स अ गुड फॉर नेशनल टीम आल्सो बिकॉज ही कैन बी रियली रियली गुड बैकअप, और यू कैन से ऑप्शन फॉर Tangte on that right flank. So Yeah. or he can play as a center forward also. So I think he played brilliant in the जो remaining minutes में वो खेले हैं. Yeah. Kumar, I'll just come to your question, but before that, on a follow up on Manveer, Shan, if he doesn't get the minutes, if he doesn't start enough games, because you've got Liston on one side and clearly there's Jason Cummings and Petrarto starting, do you think it would be wise for him to go to another club where he's going to get regular game time? There was a huge chance this season. He was supposedly, if one of the deals would have gone Mohun Bagan's way, he would have left this club. And that guy at last, that national team guy went to Kerala Blasters at last moment. But if that deal happened, he was supposed to leave that club. So they were so close of leaving him, and that would have been better for him also. Actually, he deserves a team, no, where he would get that game time, Yeah. which I feel of all the Indian foreigners or all the Indian strikers. This is the problem with Indian strikers have. They generally select a team where they will not get chance. Kerala Blasters, I don't know how they got in. Ishan Pandita persuaded. Ishan was in verge of joining East Bengal or Kerala when the last battle was on. So any of the club he would have gone, but he chose Kerala Blaster. I think he was assured a place in the starting 11, then only he went. So I expect Manveer to go to a team where he at least gets a chance. But because a talent like Manveer should not be sitting in the benches and wasting his time. Because if you see last season, he had an injury. After that, he came back. This guy is of total good quality. And I've asked many of them. In fact, Stephen, I had Stephen, the previous coach of East Bengal and national team. Stephen used to say how high regards for Manveer because he thinks that Manveer was the only striker after JJ's era was JJ got injured, and he thought that Manveer is the only way out for India right now. Mhm. Somehow, due to the injury and everything that hampered his career, but he has a special place in many people's heart, and I think this guy is total quality. If he is given proper chance, he will do wonders. Yeah. Fair enough. The question from Kumar is Mohan Bagan, Kumar, correct me if I'm wrong, because what I'm getting from this is that Mohan Bagan in possession, what do you guys think about them? And do you think they will? They clearly look like they're different from Mumbai City in the sense that they like to go long, and Sahal is a little direct. He looks for that final ball a little too often. So, what do you think? Do you think Mohan Bagan can keep possession, slow down games, and play in the future? Harry? I think so. For that they have to add a extra, you can say, midfield, and Yeah. Hugo Buma and Sahal दोनों के साथ अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. You need a that defensive midfielder to control the game in midfield. अगर आपको वहां से वो करना है, अभी तो जो उनका गेम स्टाइल है वो आपकी नेशनल टीम जैसा ही है कि आप विंग से ही, आप फ्लैंक से ही आप देखिए मोहन बगान ज्यादातर उनकी जो कोशिश रहती है अटैक की वो फ्लैंक से ही रहती है, ज्यादातर वो मिड से उतना ज्यादा अटैक नहीं बना पाते जो एक आप देखते हो. सो डेफिनेटली वो कर सकते हैं आगे, उनके पास ऐसे प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि मिड से ऑपरेट नहीं करके कर सकते हैं. लेकिन इस सीजन आप देखिए जो जॉन फर्नांडो की टैक्टिक्स रही है 3-5-2 या फिर 3-4-3 फॉर्मेशन में वो ज्यादातर खेलने की कोशिश रही है उनकी, एंड उसमें फिर आपका विंग बैक्स का भी रोल काफी ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है. एंड मिड से फिर आप, क्योंकि दो ही मिडफील्डर, आप इस मैच में दो ही मिडफील्डर थे आपके, तो उतना ज्यादा फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मिड से आप गेम कंट्रोल भी करो. सो वाली चीज थी. Fair enough. I think, yeah, it's like Hiren mentioned, it's a tactical formation kind of problem that they have. You can't do much. You're playing with two wing backs. You're going to play out wide. Ishan, completely agree. Petratos not underrated. I don't think he's underrated. Yeah, guys, do you think Petratos is underrated by any chance? भाई मतलब गोल मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, Yeah, exactly. अंडररेटेड. यार लास्ट सीजन उसका मेन था, Underrated. इस सीजन Yeah, भी आई थिंक जेसन किमिंग्स के आने से वो थोड़ा सा वो उससे लाइमलाइट चली गई है, अदरवाइज ही yeah, इज द मेन मैन. Focus like correct. yeah. Do He's you the think main man. He's the they're not giving him the credit that he probably deserves? You think he should be? I remember even when we were talking about it, we didn't say, "Oh, okay." Aram said Petratos first choice striker, best striker in this. Is he one of the best strikers in the ISL right now? विदाउट अ डाउट. Is Yeah, he is yeah. यस. he is.
There's your answer, Ishana. He's not underrated, according to our panel at least. Um, yeah, well, let's get to that first goal that they scored. Mohun Bagan will quickly wrap up this game. Did that sort of kill Round Glass's chances in the game? A little too early, too a setback very soon for them. It was too hard to come back after that. Shan, do you think early goals kind of killed the game off? Uh, can you repeat it, Rahul? Actually, I missed your question, please. Yeah, Shan. I was just asking, do you think those early goals from Mohun Bagan, the first half goals, did they kill the game off? Round Glass, was it too much for them to come back after that? Yes, actually, the initial goals are very important for a team like Punjab FC. If Punjab would have sustained the pressure in the first 45 minutes, then Mohun Bagan would have had some issues. But it was very easy for them. They got the 2 goals in the first half. It becomes very easy as a team. When you see teams with 2 goals lead and playing at home, they know the ground in a better way. They're playing, they are an established team in ISL. They are champions of ISL. On the other hand, you have a team who is playing their first game in ISL. Their backline is Indian. They have not played much game here because in Durand Cup they didn't play a single game in Salt Lake Stadium. They played a different venue. So this team needed to stop Mohun Bagan for first 45 minutes. Yeah. Then only they would have built up the pressure on Mohun Bagan. But they were unable to do so because Mohun Bagan has that quality in them. There's no doubt. And I think Hiren very correctly mentioned in the first part when he started the discussion, he said that Indian full back line, it will be very difficult for Punjab FC to stop a team like Mohun Bagan, because Mohun Bagan team is a very good attacking unit. They have so much of option. I think their reserve team is enough to beat many of the teams in ISL. In fact, the second 11 is also quite good to beat many of the teams in ISL. So, team quality wise, Mohun Bagan is a better team, and somehow that first 2 goals set up the game for Mohun Bagan, and after that it was very difficult. Punjab somehow tried in the second half, scored a goal also. That offside was very close. I don't know. Hiren ko pata. Hiren stake. I have not heard. That Hiren was stake. Offside. Offside. Yeah, it Offside. looked Is like the that shoulder offside? was. It was Uh, offside. Yeah. But I think the intent they showed in that 15-20 minute spell was nice, which I Yeah. really liked about a new team in ISL. He's come and they have done that ways better. So no गेम issues, bhai. गेम प्ले वाइज दे वर गुड. मतलब फर्स्ट गेम अगर आप देखिए ओडिशा वर्सेस चेन्नई, उससे इस गेम की इंटेंसिटी भी बेटर थी और Yeah. देखने में मजा आ रहा था. मतलब ऐसा नहीं था कि वो मतलब क्या बोलते कि डिफेंसिव खेलने के लिए आया है पंजाब एफसी. दे शो कैरेक्टर कि भाई चाहे मोहन बगान सामने हो लेकिन हम जाएंगे गोल के लिए. और पहले गोल एकदम. फर्स्ट हाफ में 2 गोल कंसीड करने के बाद भी जो सेकंड हाफ में वो आए, दैट शोज देयर कैरेक्टर मेंटालिटी कि आप मतलब ये नहीं आपने सोचा कि भाई अब हमको 2-3 और ना पड़ जाए. दे गो फॉर दी क्या बोलते कि इक्वलाइजर और अ गोल. एंड उसमें ही Correct. उनको क्या बोलते कि गलती भी इसीलिए हुई वहां पे. ग्लान मार्टिन्स की गलती क्यों हुई कि अब जिस तरह से सेकंड हाफ में उन्होंने प्रेसिंग करना स्टार्ट किया था, आप देखिए कि टाइम ही नहीं मिल रहा था मोहन बगान के प्लेयरों को बॉल के ऊपर, और सीधा ही उनको आता था बॉल, तो उनको क्या बोलते कि डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा था, और उसी में यहाँ पे ग्लान मार्टिन्स ने गलती की. सो आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं है, और 2-3 प्लेयर उनके आ जाने से आई थिंक सेटल डाउन हो जाएगी पंजाब एफसी. फर्स्ट मैच था तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं नर्वसनेस या फिर वो भी होता है तो स्टार्टिंग में, एंड सेकंड हाफ में हमने देखा कि दे वर मच बेटर. Hiren, one thing I need to ask you and Rahul both. Do you think they going with the foreigner goalkeeper is costing them somewhere? डेफिनेटली I'll ask you. दे हैज टू चेंज दैट बिकॉज अगर आपको यहाँ पे इंडियन गोलकीपर्स के ऑप्शन आपके पास है, यंग देयर आर लॉट ऑफ यंग गुड यंग इंडियन गोलकीपर्स, सो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे. चाहे ये सीजन भले ही आप किरण कुमार लिंबू से निकाल लो, लेकिन यू हैव टू कम अप विद द इंडियन गोलकीपर, एंड दैट फॉरेन स्लॉट हैज टू बी गिवन टू द अदर पोजीशंस. Yeah, I completely agree. I think there are a couple of people in the chat also asking the same thing. Kumar, Banjo, both saying that yeah, this Indian backline is costing them, which happened in the game because there was times when there were guys who switched off, the backline wasn't solid, and things like that will happen when with an Indian backline, and we saw it today. Yeah, backline is one thing that they have to improve. Apart from that, guys, where do you see Punjab going from here? Because it's a good
I would say it was a decent first start for them. They were not bad. They came out in the second half pretty well. Where do you guys see? How do you guys see them improving and playing in the coming games? Do you see them giving real fights? Yeah. आई थिंक डेफिनेटली दे विल गिव अ फाइट, उसमें कोई डाउट नहीं है। दो तीन प्लेयर आ जाने से आई थिंक अच्छी स्क्वाड उनकी बन जाएगी। एंड देखिए क्वालिटी तो है प्लेयरों के पास, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी वाले प्लेयर नहीं है। सो डेफिनेटली एक्सपेक्ट तो करेंगे कि अच्छी फाइट वो पुटअप करे, पहला ही सीजन है नो डाउट। एंड देखते हैं किस तरह से इस मैच से, जैसे मैंने पहले भी बोला कि उनके लिए अब एक बेंचमार्क सेट हो गया है, उनको पता चल गया है कि भाई किस लेवल का है अभी आईएसएल में। सो डेफिनेटली आई थिंक एक्सपेक्ट करेंगे कि लेट्स होप कि आगे आने वाले मैचेस में अच्छी फाइट पुटअप करे। Yeah. Will be interesting, Shan. No, I agree. But I agree with Hiren. Punjab FC has the quality. I think they need to get in few changes in their team, and Yeah. this team will be up and running. This team has a lot of quality. I think I was surprised in the away game how they chased this game with Mohun Bagan by being 2-0 down. The positive side of their part. Second half, their ball position improved. Their shots on target improved. If you see the total shots of the game, they have improved. So this team has the potential. First 45 minutes cost them the game, but this team had a potential, and I think this team will. I don't think I don't agree with Lord Baker saying I see Punjab finishing 12th. I think there is no 13th team in the league, so that is not possible, bro. But I don't see they would be a easy pushovers to other clubs for other clubs, especially the teams in the middle tier, according to me. Mohun Bagan, Mumbai City FC, and Goa, I think, are a bit ahead of other teams, but rest all the teams are beatable in their day. So nothing to Yeah. worry. This Punjab side is good, and I think I think they have a very settled team also, and they can go far from here. Yeah, I They think will that's a improve great by point. time. Great They point, Shan, improve. because वो yeah, इम्प्रूव करेगा ही, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिस टीम विल इम्प्रूव इन कमिंग टाइम, दिस विल yeah, इम्प्रूव. and the fact that they were playing an away game and they didn't look phased by it in the second half at all, Yes. that shows a lot of character, because we see when there are big crowds, teams kind of fall off, they're nervous. So yeah, that's actually a great point. And there's another game that happened, Odisha Chennai. Better side won in the end. Hiren, do you think Odisha were the better side in the end, or do you think ओवरऑल it was a level game? ओवरऑल गेम प्ले वाइज दे वर बेटर, नो डाउट अबाउट दैट। बट ऐसा नहीं है कि चेन्नई एफसी ने मतलब बिल्कुल चांस ही नहीं क्रिएट किए। आई थिंक दे आल्सो क्रिएटेड चांसेस बट दे अनएबल टू फिनिश देम, आई वुड से। एंड राफेल क्रिवलारो एंड अटैक थोड़ा सा मेरे को उनका स्लो लग रहा था, आई Yeah. थिंक चेन्नई एफसी का। दैट्स द वन ऑफ द थिंग जो मेरे को मिस लगी उनकी ओर से। ओडिशा एफसी के लिए आई वुड से दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर सर्जियो लोबेरा। आई थिंक जो उन्होंने मोहन बगान के सामने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे परफॉर्मेंस, आई थिंक वो यहाँ पे उन्होंने क्या बोलते कि इस मैच में दिखाई कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सर्जियो लिबरा की गेम स्टाइल से, पोजीशन, पासिंग, एवरीथिंग वाज देयर। एंड आई थिंक इस मैच में वो थोड़ी सी क्लिक होती हुई दिखी ओडिशा एफसी। आगे आने वाले मैचेस में मच बेटर देखेंगे। जेरी का दैट वाज अ ब्रिलियंट कर्लर, ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम जेरी। Oh, what a goal! एंड जेरी, इजाक एंड आइजैक, ये तीन मतलब काफी क्रूशियल प्लेयर होने वाले इस सीजन फॉर ओडिशा एफसी। अगर हम इंडियन प्लेयरों की बात करें तो आई थिंक ओवरऑल अ वेरी गुड सेटिस्फैक्टरी विक्ट्री फॉर, आई वुड से, फॉर ओडिशा एफसी एंड सर्जियो लोवेरा। आई थिंक अच्छा आगाज किया है उन्होंने आईएसएल में। एंड चेन्नई एफसी के लिए आई थिंक दे नीड टू in front line, I think they need to improve more in terms of the finishing and final third. Hiren, quickly just on the first goal, Jerry, beautiful finish, but keeper's mistake. Do you think first goal? यस सोमिक मतलब उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखा, दो तीन बार उसने मतलब क्या बोलते कि वो थोड़ी सी स्लोपी दिखा। सो डेफिनेटली दैट शॉट हैव बीन स्टॉप्ड, बट दैट वाज अ गुड शॉट। एंड आई थिंक रोहित कृष्णा थोड़ा सा ब्लॉक भी कर रहे थे साइड, आई थिंक ही वो भी हुआ, अदरवाइज इट विल बी मे बी स्टॉप्ड। Yeah, fair enough. Shane, before we move on to Jahu, who I want to talk about, uh, Sauvik is asking you about Nishu, unregistered. Do you Can you shed some light on it? Issue unregistered for East Bengal on 25th. आईएसएल के लिए Yes, sir. April. No, I don't know about it. I need to check with that. I'll get back to you. Yeah, I sorry, need to check Sauvik. with that. Okay. Shine again on Jahu.
really controlled that first half. The first half, his display, some of the passing was quality. He Yesterday, I was doesn't get, discussing. yeah. No, no, please continue. I'll just tell No, on. no, yeah, Shayan, that's it. Yesterday, I was discussing with few of my friends, and they were saying that Ahmed Jahu going to Mohun Bagan to Odisha FC, and Odisha FC has made a team of old people. And after that 4-0 loss to Mohun Bagan, many of the people started trolling Lovera and his team, the aged team and all. But these guys have that quality. Ahmed Jahu leaving Mumbai City FC was not for. He was given a 1-year contract by Mumbai City FC this year also. He left the club because he wanted a club where he will get multiple year contract. So he got Yeah, that club, and this guy is something special. I think till now, if you ask me, Mumbai City FC will have has a problem right now in his place. I think the guy player whom they yeah. have got, I don't think till now he's able to match the Jahu's level. It will take some time, but Jahu's addition to Odisha FC has boosted their chances. I think he was a pick of the players. I think Lenny Rodriguez again a player. I think Ahmed Jahu, Lenny Rodriguez, how they played today's game. I think I must appreciate how they played, and Jahu playing with his old boss, Mr. Lobera. And what a nice! I think this was expected. I think this after few games you'll see this Jella working. Mortada Fall in the back line was very strong today. If you see Amir Awade, Mortada Fall, Carlos Delgado, I think everybody chip in with their job. And Yeah. Ahmed Jaw is something special, bro. That is there, and the Moroccan flavor he has and he brings into the table is something very very Some of the passing was special. just quality. Yes. But yeah, It's total. It's a pure Ahmed Jahu on his day can kill any team. Any team. yeah. I think when he played last year in the AFC last Champions League, last year Mohun Bagan was also interested in Ahmed Jahu, but yes, last year Mumbai City got a 1-year construction from him. So yes. Crazy. But Ulkash is saying, I don't know about the others, but I'm really liking the Sports 18 broadcast. No side business, just focusing on the game, nice graphics. Also doing the pre-show on YouTube in multiple languages, nice step. What do you guys think? Sports 18, liking it? Geo Cinema? ओवरऑल वेरी गुड आई थिंक एक्सपीरियंस. मेरे को तो मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को, लेकिन हाँ. ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड ब्रॉडकास्टिंग. मतलब फ्री में तो और क्या ही मिलेगा. ये बात भी है. आई एग्री विथ हिरेन दैट इस फ्री में इससे अच्छा और कुछ क्या हो सकता है. मिल जा रहा है फ्री में. आप स्ट्रीमिंग लास्ट बार तो हॉटस्टार के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन देना पड़ता था. अभी तो फ्री में देख लो. कुछ लोग जब फ्री की लिंक मांगने आते हैं तो बोलते हैं भाई ये लिंक में सिर्फ ऑप्शन नहीं आता है, या सिर्फ HD क्वालिटी का ही आता है, डेटा पैक नहीं होता. मैंने बोला भाई फ्री लिंक भी चाहिए तुमको, उसमें भी तुमको सारे ऑप्शन चाहिए कि भाई डिफरेंट क्वालिटी का ऑप्शन दे, तो भाई उसके लिए तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे. बोल रहे इसमें सिर्फ HD क्वालिटी का ऑप्शन आता है, मेरे डेटा ज्यादा कंज्यूम हो जाता है. Do you guys know if there was a pre and post match show on TV? Because I नहीं was. नहीं है No, there's no pre and नहीं post वो match नहीं show. है. But you can see over here, no? SportsKhabri, Indian Food and Football Curious. Yeah, this is your pre and Arun post Food. match. I mean, not pre-post match. पोस्ट If मैच you तो यही want भी मिल जाता है. pre and during the match, please catch Indian Food and Football and Curious Harry. It's ongoing content. Every second you will be entertained. But yeah, quickly then, Hiren, on Jahu, what do you think about his performance? चाहू इज भाई डेफिनेटली वो मतलब ऐसा प्लेयर है कि वो मतलब किसी भी टीम का वो क्या बोलते हैं कि मेन पीस होता है ना, उस तरह का है. डेफिनेटली सर्जियो लेबर जो प्लेइंग स्टाइल है उसमें वो काफी क्रूशल होने वाला है. सो बंदे में मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है क्वालिटी का. एंड लास्ट सीजन भी बेहतरीन था, इस सीजन भी आई थिंक शुरुआत भी उसने जबरदस्त तरीके से एक दो उसने जो पासिस निकाले थे, टॉप नॉच पासिस थे वो. सो डेफिनेटली ही विल बी ओडिशास वन ऑफ द क्रूशल की प्लेयर if Odisha have to do या फिर want to do good in this season definitely. Well, then on the strikers, Roy Krishna and Connor Shields, Shine, who do you think was the better of the two? Neither got on the score sheet in the end, but who do you think made more of an impact? Roy was better, in fact. I think Connor. Yeah. I was very disappointed with Connor Shields. Missed a very Roy, good I chance think also in the first half. Yes, Yes, where nice that cross should be a from- goal. There should be a Yeah. goal. Yeah. that should have been a goal. Correct. That should have been a goal.
So I would rate Roy better in that way. Roy was better. Roy was substituted very early, and when अच्छा Diego हुआ Mauricio, तभी तो भाई डेलगा वो उसका मॉरिशो का गोल आया। रोही को Yeah. स्टार्टिंग क्यों कराया था? वही समझ में नहीं आया मेरे को तो। नो पता नहीं अभी रॉय तो मैं जो सुना हुई सिलेक्शन वाज बेसिकली लोवेरा इन्फ्लुएंस था तो ही विल स्टार्ट मोर गेम्स नाउ अरे बिकॉज होता ऐसे है ना थोड़ी कोच होता है। का होता है कोच का तो है ना भाई वो तो हम नहीं क्या वो वो मेरे को भी पता है कि भाई हर कोच का फेवरेट प्लेयर होता है कि जिसमें उसको लगता है कि यही सब कुछ बोलूं। करके दे देगा मेरे को। हम्म, लेकिन पिच के ऊपर नहीं कर पाता ना, वो दिक्कत है ना। जैसे रहीम अली है, वो- रहीम अली के ऊपर कोच का ट्रस्ट है, लेकिन हम्म, अब कितने चांस मिले उसको? कम चांस नहीं मिले भाई। दे ही हाँ, गोट लॉट ऑफ चांसेस एंड स्टिल ही डिडंट डिलीवर। सो नहीं नहीं दैट्स द थिंग वो ना तो भाई। है वो तो है आई रोहित एग्री कृष्णा का मेरे को मतलब कॉर्नर सीन से आप कंपेयर कर लो इसलिए, अदरवाइज मेरे को मतलब चाहे भले कॉर्नर सीन ने जो वो मिस किया हो, अदरवाइज मतलब पोजीशनिंग में तो अच्छी आ रहा था एटलीस्ट, और वो डाल रहा था। रोहित कृष्णा का तो मेरे को फर्स्ट हाफ में वो तो पता ही नहीं चला कि वो खेल रहा है। कहीं पे भी मतलब उसका कुछ नहीं उसका इम्पैक्ट दिखा। नहीं Connor Shield had that chance though I think he could have scored that game so if that would have been a आ, different लेकिन वो भी तो जरूरी है कि उस पोजीशन में वो आया। ये तो कहीं पे नजर दूर दूर तक नजर में नहीं था ये। एक इसका कंट्रीब्यूशन रहा, वो गोल में वो नीचे बैठ गया, अदरवाइज हाँ वो क्या बोलते कि वो हो जाता। No, I agree that sometimes Roy, his movement can be और रोय frustrating. का आप देखिए लास्ट सीजन सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में आप देखिए उसका परफॉर्मेंस डाउन ही हुआ था बेंगलुरु एफसी के correct लिए भी। Yeah. correct No, correct not only second half, I think throughout the season. हाँ But थ्रू आउट द सीजन। anyways, Kumar, yeah, on the Punjab FC one, I think what we were referring to, I know what you're saying. They should have played in a low block. They should have played on the counter. But after going 2 goals down, we were just saying it's good that they came out in the second half and they came out strong. Moving to Roy Krishna, do you guys see him starting consistently ahead of Diego Maurizio, Shan? देखो ये कोच का चॉइस रहता है और मैं जितने भी Uh, कोचेस को देखा उनका एक अलग चॉइस रहता है दे हैव दिस चॉइसेस एंड they keep on playing that guy I think Mauricio will have an impact because this guy has played for Odisha for a long time right now अच्छा he's a good player last season he has played I think this is second season with Odisha so Mauricio I think मेरे को if you ask me personally Mauricio should start in ahead of Roy Krishna because if you see Roy's form has gone downhill. If you see last 2 years, Roy's form has gone downhill. And but again, it's a coach's call. If you ask me personally, I think I'll put Mauricio ahead of Roy. Roy could be a second half player for me, but again, it's Lovera's call and how he thinks and how he thinks. It's more important, not me. yeah. So I think he being in the helm, I think Roy is how he got Roy this time for Odisha. I know a few of the backstories, and I was expecting that Roy would be a part of this team and play a part of this playing starting 11. So don't be surprised if you see again Roy in the next game starting the starting 11. No, fair enough. Because I think Roy, one thing he'll give you is 100% hard work, 100% commitment. Most games, at least what I've seen for BSC, is always worked hard. But I get what Hiren is saying, where sometimes his movement is, sometimes he's not there in the right place at the right time, and it's frustrating. And even his finishing kind of went off last season. He was headers, these simple headers are going off his shoulder, things like that. But yeah, I mean, uh, Shine, question for you. You love Ankit Mukherjee Hmm. and Sarthak Guli because they played in East Bengal. What do you think about them? I thought Ankit Mukherjee was pretty decent. Yeah, Decent. decent. Rahul, you thought he was decent. पता नहीं I फिर आप What did you सो think रहे about थे. him? क्या राहुल तुमने सैन भाई को एक क्वेश्चन पूछ लिया यार। क्या यार? Arey, No, no. arey, no, both of you can give your takes. No, if I नहीं ask यार, अंकित Kumar, I will मुखर्जी और answer. सैन भाई क्या यार। Then इसको बोलने. I think these both the players. If you ask me personally, and in fact, I said Randy Singh up front because Randy Bhai was very sure that this Huh. Ankit has potential to play in ISL, and I said him up front that well, I have talked to his previous coach. I don't want to name the coach's name, and both the names he has taken, Kumar has taken, they are not ready for ISL. Okay, I yeah, think they, if you that's yeah, fair. and they Yeah. will have a very. I think they are not ready for I League also. If you ask me, a top tier I League team will not have them in the team.
And in fact, last year when I was part of the East Bengal, I used to generally go watch all the games, and Stephen was we used to discuss many things. And I was called in a TV channel and I was asked about where I should play Sarthuguli next season. So I think I said upfront that Sarthuguli should be removed from the team, and that is the only way forward. Because I don't see, with all respect and everything given, we are not ready for ISL. Fair enough. Let's be blunt and accept things. नहीं Yeah, चलता. This doesn't work. इसीलिए मैंने बोला राहुल तुमको too कि aggressive. No, for इससे पूछो like as a right back, I think he was whatever. But anyways, yeah, Harry But on but राहुल को इसीलिए अच्छा लगा. But राहुल को अच्छा तीसरा लगा. ये तीसरा बात तीसरा not गोल acha, देखो ना not acha. I said it was decent. Like okay. अरे मजाक कर रहा हूँ Hey, यार. no. There's no stress. Yeah, तीसरा Hiren. गोल देखो ना कि कैसे पड़ा वो हाँ. उसने पास कैसे दिया Yeah. मुखर्जी साहब ने But too aggressive also for a right back. What do you guys think? उसका नेचर ही अग्रेसिव है राइट बैक खेले कहाँ खेले क्यों से लेकिन डेफिनेटली आई एग्री मतलब उसको राइट बैक खिलाना थोड़ा सा वो तो है रिस्की है एग्री मतलब वो तो दिख गया आज एंड बैक लाइन में आई थिंक टू बी ऑनेस्ट चेन्नई एफसी की बात करें तो आई थिंक रेन एडवर्ड्स या लेजर सिस्कोविच कोई भी खेल ले ठीक है एक या तो विकास युमनाम अच्छा ऑप्शन है आपके पास आकाश सांगवान अच्छा है राइट बैक में आपके पास दिक्कत है आपके पास उस तरह की ऑप्शन नहीं है सो लेट्स सी उन्होंने वेंसपोल था सिडनी वेंसपोल उसको भी सेल कर दिया टू ईस्ट बंगाल सो आई थिंक लगते हैं अंकित मुखर्जी को कितना टाइम मौका मिलता है Yeah, fair enough. We spoke about this. Any changes, guys? Who's the top scorer this year? टॉप स्कोरर तो अभी तो शुरुआत हुई है डिएगो मोरिसियो पेत्रातोस क्यूमिंग्स जॉर्जे परेरा डियाज यही सब ये नाम तो होंगे ही होंगे भाई उस लिस्ट में I have a bold prediction. I don't think Cummings is going to score more than 10 goals. अच्छा कर Cummins लेगा नहीं भाई करेगा. पेनल्टी भी लेगा भाई पेनल्टी ले भी लेगा हाँ, no, see, non-penalty goals he won't score more than 8. हाँ, वो ठीक नॉन है. पेनल्टी फिर बोल हाँ सोच भी सही है लगा लास्ट Not more ईयर than डेविड 8. सिल्वा का 12 गोल था, बट 7 गोल पेनल्टी में था. हाँ ये भी है भाई Yeah, but I think Petratos still. पेट्रोटोस मेरे को भी लगता है पेट्रोटोस एंड आई थिंक और एक प्लेयर जो मेरे को लगता है मोरिसियो करेक्टली सेड ही इज अ फिनोमिनल स्ट्राइकर एंड अगर इफ यू आस्क मी एनी वाइल्ड डार्क हॉर्स फॉर बी टू विन दिस Rahim इंडियन Ali. कोई स्ट्राइकर तो नहीं. रहीम अली Just फिर तो joking. मैं नहीं जोकिंग फिर आकाश फिर तो अंकित मुखर्जी बेस्ट डिफेंडर के लिए भी मैं नॉमिनेट करता हूँ. But I think Mauricio and this guy, Diego Mauricio, I think he's one of the front runners. And if Diego doesn't have, George Pereira Diaz is also a very good striker, and Petratos. I think these three are my pick. And who knows, Jason Cummins would be and wake up later in the season, and he can surprise all of us. But Rahul doesn't seem impressed with this. But I am not convinced. He seems like no, I don't know. Let's see. Anyways, Kumar, we spoke about the Akash Sangwan cross. It was beautiful ball, which should have been finished off, but didn't happen. Okay, guys. Final thoughts before we wrap up. Good day of football, Hiren. गुड डे यस यू कैन कॉल इट गुड डे बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन आया था ड्यू टू द लाइटनिंग Lightning, yeah. बट ठीक है अदरवाइज बोथ द गेम्स वर गुड गेम आई थिंक उतना ज्यादा कोई बोरिंग गेम नहीं था दोनों मतलब अच्छे गेम थे सो दैट्स ग्रेट टू सी Shan? no, I was. I honestly I was wishing for a Mohun Bagan like 2-2. That would have been a perfect day actually, but didn't happen. तुम तो चाहोगे ही Genuinely, I ना. wanted. तुम तो चाहोगे ही. तो आप नहीं चाहते क्या आप भी चाहोगे नहीं मैं बोल नहीं सकता ना वो बात. बट इसके लिए ठीक है. क्यों नहीं बोल सकते मोहन बगान के फैंस ज्यादा देख रहे हैं इसलिए नहीं वो नहीं. आई शुड नॉट से ना. इफ यू आर मतलब यू शुड बी न्यूट्रल व्हेन यू से. एंड नहीं वो भी बोल रहा है. आई थिंक राहुल का क्या, राहुल हैज जस्ट सफर्ड अ
loss, na, to Yeah, I will Raj always say, Kerala Blasters lose every game 3-0, 3-0. I don't mind it. But anyways, But yeah, I think both the games were of good quality. I think, yeah. especially the second game, I think was better. If you ask me personally, second पहला game से मेरे को second game ज़्यादा अच्छा लगा. Quality wise and the हाँ quality of football which was on display, I think was better. And ये मेरे who को knows? आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना था, सॉरी टू इंटरप्शन भाई, कि आईएसएल में ये लोग इंटेंसिटी, मतलब जो आज थोड़ी सी पंजाब वाले गेम में देखने को मिली, इस इंटेंसिटी के साथ मैच क्यों नहीं खेलते? मतलब प्लेयर तो आपके पास, आप इंडियन प्लेयर है, ऊपर से आप फॉरेनर डाल रहे हो, तो व्हाई नॉट इंटेंसिटी, और जो एक वो चाहिए हमें गेम की पेस, वो आईएसएल में बहुत स्लो हो जाती है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस जब हम देखते हैं, जैसे अभी चाइना के सामने हमारा गेम था, किस इंटेंसिटी पे वो खेला गया था, तो व्हाई नॉट, मतलब आईएसएल में हमें वो देखने को नहीं मिलता? क्या रीजन है आपको क्या लगता है? I genuinely think it's because the foreigners that play are हम्म usually over 30. At least that's what हम्म I've seen. At least in BFC, what I've seen is it is not the Indians who slow the game down. They try to play quickly, but the foreigners kind of they want control and things like that. And they're 30 plus, so reasonable that it kind of becomes like that. But yeah, Correct. नहीं, I agree with that. ये एक सबसे बड़ा हिडन प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो हम लोग एजेड फॉरेनर के साथ जाते हैं, और कोच का भी कभी कभी कोच का भी रहता है दैट वी डोंट वांट टू गो टू फार. जो मेरे को आज पंजाब का अच्छा लगा, उनका इंटेंट अच्छा था. They had players who tried, and if you see, their average age was around 27, 26, 27. 27 years is their average age of this side. जो आपका मोहन बगान का 28 है, एक साल ज्यादा है. तो उनका वो था, वो दौड़ रहे थे, they were trying many things, but lack of experience cost them that game. I think वो होता है. तो वो एक प्रॉब्लम है भाई. क्वालिटी ऑफ फॉरेनर्स एजेड होने से क्या होता है, यू डोंट उतना वर्कलोड आप नहीं ले पाओगे, सबसे बड़ा चीज. और सेकंड पार्ट है कोच का इंटेंशन क्या है, वो भी हम्म इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके पास बिल्कुल, वो हाँ क्वालिटी डिस्पोजेबल में है ही नहीं, तो वो कैसे दिखाएंगे, बोलेंगे कि आप ऐसे खेलो. You should हम्म have that quality on disposal, then only you can expect that that would be displayed on the field. No, if you don't have the quality on disposal, how you will display that? That's an easy. हम्म yeah. Man, asking for opinion. BFC talk over yesterday. We'll be back when the next BFC match comes, and then we'll talk about BFC. India Myanmar prediction, guys. Last thing before we wrap up, quickly. India Myanmar prediction, my prediction were 2-0 to India, and let's hope Primary will not start match. Gurkirat has to start this match without a doubt, and India has to win this match by comfortably, क्योंकि अब आपको टाइम भी Yeah. मिल चुका है, 2 ट्रेनिंग सेशन भी हो चुके हैं, सारी स्कोर भी आ चुकी है, सारी चीजें हो चुकी है. अब ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए. मतलब अगर आपने जो बांग्लादेश के सामने जो दिखाया था गेम प्ले, वो दिखाएंगे, तो फिर तो मतलब इस बार आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, सिंपल सी बात है. फिर अब इस बार आप ये नहीं बच सकते कि टाइम नहीं मिला है, ये नहीं मिला. True. देयर हैज टू बी एकदम सम, थोड़ी सी रिदम दिखनी चाहिए अब, क्योंकि आप एकदम इवेंचुअली आप प्रोफेशनल फुटबॉलर हो, नहीं तो हम ही खेल लेते फिर वहां पे. तो वाली करेक्ट. चीज है ना, अगर ऐसा ही खेलना है तो फिर तो वही चीज है. सो वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं. लेट्स होप कल करके दिखाए वो प्लेयर. Yeah. Shan? My prediction, India will win by a single goal. Yeah. बिकॉज मेरे को इंग्लैंड इंडिया का गेम उतना खास नहीं लगा है. जितना भी मैं बोल दूं, इतना ट्रेनिंग सेशन नहीं मिला. बांग्लादेश को हराने के लिए आपको अगर ट्रेनिंग सेशन की जरूरत पड़ता है बार बार, तो कुछ तो इश्यूज है भाई, ये तो मानना ही है. और उसमें भी आप पेनल्टी से जीतते हो, उसमें भी सुनील छेत्री को आना पड़ता है आपको बचाने, इस ओवर में भी. तो दैट शोज आपको आपने रेडी नहीं किया अपना टीम को. और कल जब हम म्यांमार से खेलेंगे, दैट गेम वुड बी प्रीटी, मतलब आई थिंक म्यांमार टीम इज अंडर 23 टीम बेसिकली. उन्होंने लाया है विथ नो सीनियर टीम प्लेयर इन द साइड राइट नाउ, राइट, वेयर हम लोग के पास गुड मिक्स है सीनियर और जूनियर्स का. तो आइडियली वी शुड विन दिस गेम, and if we are going to round of 16 after this, and I think now coach and nobody has to compete, because now you've got the time, you adjust to the climate and everything is in your favor. और अब 72 आवर्स का एक ब्रेक लेके भी आ रहा हूँ, तो अभी तो अब करोगे अच्छा ना. कल जीतेगा Yeah. इंडिया, इतना है. राउंड ऑफ 16 में जाए, उसके बाद देखता हूँ कौन. वियतनाम इज द मोस्ट लाइकली, वियतनाम और सऊदी अरेबिया में सुन रहा हूँ. सऊदी अरेबिया आएगा, सऊदी अरेबिया आएगा, क्योंकि सऊदी अगर सऊदी अरेबिया वियतनाम को बीट करता है, देन सऊदी अरेबिया डिफेंडिंग चैंपियन ऑफ
अंडर 23 एशियन कप। मगर Yeah, उनका अंडर 23 टीम तो आया नहीं है ना, राइट? जो मैं सुना हूँ किसका? सऊदी का, सऊदी हैव सेंड अ डिफरेंट टीम है। अच्छा, अंडर 20 टीम भेजा है क्या उन्होंने? हाँ हाँ हाँ। फिर भी भाई हमारी तो ले लेंगे। वाली टीम है ना। हाँ वो तो है, वो है। आप देखो, वो अपनी अंडर 23 टीम साफ चैंपियनशिप में भेजने वाले थे, वो तो बात बनी नहीं, लास्ट मोमेंट में नाम वापस ले लिया, फिर कुवैत आ गई। नहीं तो आप देखो, तो वो अपनी अंडर 23 टीम साफ में भेज रहे थे हमारी सीनियर टीम के सामने, तो क्वालिटी किस वही तरह की काफी है था, उनके पास। वो भी काफी हाँ, था। हाँ, तो क्वालिटी तो है उनके पास। सऊदी अगर थर्ड पे फिनिश करोगे तो जापान मिलेगी भाई। फिर तो छोड़ ही दो, फिर हाँ, थर्ड नहीं होगा, सेकंड ही होगा, मेरे को लग रहा है। मोस्ट लाइकली विल बी द सेकंड। हाँ, हार गए तो थर्ड थर्ड नहीं हो होगा। सकता है ना। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा अभी, इसके बाद अगर हारना पड़े तो आई थिंक come back. देन श्योरली आवर रैंकिंग इज अ स्कैम। Yeah. स्कैम्स और कुछ है ही नहीं, सिंपल। Yeah. Well, yes, guys, there's football tomorrow also. Catch the Asian Games matches. There's an ISL match as well. Mumbai City play Northeast United. Catch both those games. Also, like, share, and subscribe to Sports Khabri, Arun Food, Curious Harry, and Indian Food and Football. We'll be back for more Indian football and ISL related content. See you and good night. गुड नाइट गाइस। गुड गुड।